Hello everyone. Welcome to new session of Marathi reading and listening practice. In this session also we are continuing with our fun way of learning Marathi. We will read few more jokes in Marathi and we'll see their meanings in English and Hindi. So let's start. एक माणूस पोलीस स्टेशनमध्ये गेला आणि त्याने पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली. माणूस: साहेब, मला फोनवर धमक्या मिळत आहेत. पोलीस: कोण आहे तो जो तुम्हाला धमक्या देत आहे? माणूस: साहेब, टेलिफोनवाले म्हणतात बिल नाही भरलं तर लाईन कापून टाकीन. A person went to police station and he registered his complaint in police station. So that person said, Sahib means sir, I am getting threats on the phone. Dhamki means threat. Dhamkiya, its plural form is threats. Police asked, who is he? Who is he who is giving you threats? Who is threatening you? Person says, sir, it's telephone company persons. They say if I don't pay the bill, they will cut my line. Husband, sorry, I'll read it first. नवरा: आज घर आवरलेलं दिसतंय. तुझं व्हॉट्सॲप बंद होतं का आज? बायको: नाही हो, फोनचा चार्जर सापडत नव्हता. तोच शोधण्याच्या नादात घर आवरलं गेलं. हजबंड आस्क, टुडे the house looks very clean or tidy. Avarane, it means to keep things on its place, keep it clean. So he's saying that the house looks clean, neat and tidy. Was your WhatsApp not working today? Wife says, no dear, I didn't find my phone charger, and while searching that, whole house got cleaned up or got tidy. So let's see the meaning of these two in Hindi. एक आदमी पुलिस स्टेशन में गया और उसने पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी. तो आदमी कहता है, साहब, मुझे फोन पर धमकियां मिल रही है. पुलिस पूछता है, कौन है वो जो तुम्हें धमकियां दे रहा है? वो आदमी कहता है, साहब, टेलीफोन वाले कहते हैं बिल नहीं भरा तो लाइन काट देंगे. पति कहता है, आज घर साफ सुथरा दिख रहा है. तुम्हारा व्हाट्सएप बंद था क्या? पत्नी कहती है, नहीं जी, फोन का चार्जर नहीं मिल रहा था. वही ढूंढने के चक्कर में पूरा घर साफ हो गया. बन्या: हे केळं कसं दिलं? दुकानदार: 1 रुपयाला. बन्या: 60 पैशांना देतोस का? दुकानदार: 60 पैशात तर फक्त याचं साल येतं. बन्या: हे घे 40 पैसे, साल तू ठेव आणि केळं मला दे. So Banya asks, how much is this banana? Shopkeeper says, for 1 rupee. Can you give it me for 60 paisa? Shopkeeper says, in 60 paise you will get only its skin. Banya says, then take this 40 paise, keep the skin with you and just give me banana. So Banya पूछता है, ये केला कैसे दिया? दुकानदार कहता है, 1 रुपया को. बन्या: 60 पैसों को दोगे क्या? 60 पैसों में तो इसका सिर्फ छिलका आएगा. तो ये लो 40 पैसे, छिलका तुम रखो और केला मुझे दे दो. पत्नी: बायको, लग्नानंतर तुमचं आता प्रेमच राहिलं नाही माझ्यावर. नवरा: परीक्षा पास झाल्यावर कोणी अभ्यास करतं का? सो वाईफ सेज, आफ्टर marriage you don't love me anymore.
Husband says, after exam is passed, does anyone study? पत्नी कहती है, शादी के बाद तुम्हारा मुझ पर प्रेम ही नहीं बचा। पति कहता है, एग्जाम पास होने के बाद कोई पढ़ाई करता है क्या? नेक्स्ट, बायको, माझी एक अट आहे. नवरा, काय? तुम्ही मला सोडायला आलात तरच मी माहेरी जाणार. माझी पण एक अट आहे. काय? मी घ्यायला आलो तरच परत यायचं. So wife says, I have a condition for you. Husband asks, what condition? So wife says, if you come along with me to drop me to my mother's place, then only I will go. मला सोडायला आला तरच. If at all you accompany with me to drop me, Maher means mother's place of a married woman. Then husband says, even I have a condition for you. What condition? Kai? If I come to pick you up, then only you should return. Means till that time don't return. Stay there only. So पत्नी कहती है, मेरी एक शर्त है. पति पूछता है, क्या या कौन सी शर्त? अगर तुम मुझे छोड़ने आए तो ही मैं मायके जाऊंगी. तो पति कहता है, मेरी भी एक शर्त है. कौन सी शर्त? क्या शर्त? अगर मैं लेने आऊंगा तो ही वापस आना. एका आजींनी हॉस्पिटलमध्ये फोन केला आणि म्हणाल्या, मला रूम नंबर 302 मधल्या निर्मला यांची तब्येत कशी आहे ते कळू शकेल का? जरा काळजी वाटते म्हणून फोन केला. जरा 2 मिनिटं होल्ड करा हं, असं म्हणत तिथल्या ऑपरेटरने 3ऱ्या मजल्यावरच्या नर्सशी फोन जोडून दिला. नर्स म्हणाली, बऱ्या आहेत त्या आता. BP पण नॉर्मल झालंय आणि सगळ्या टेस्ट्स पण नॉर्मल आल्यात. डॉक्टर म्हणतायत उद्या सोडतील घरी त्यांना. वा वा, खूप बरं वाटलं ऐकून. धन्यवाद, आजी म्हणाल्या. नर्सनं विचारलं, तुम्ही त्यांची बहीण बोलताय का? नाही, मी स्वतः निर्मला बोलतेय 302 मधून. मला कोणीच काही धड सांगेना म्हणून म्हटलं स्वतःच चौकशी करावी. So a grandmother or an old lady called into hospital and said, I want to know about Nirmala from room number 302. I want to know how is her health or how is she doing. Can I know that? जरा काळजी वाटते. I am feeling little worried. That's why I called you. Please hold for 2 minutes. Saying this, the operator connected the phone to nurse on the 3rd floor. Nurse said, बऱ्या आहेत त्या त्या. She is doing good now. BP is also normal and all the tests are also normal. Test normal आल्या, it means all the results of the test are also normal. Doctor is saying she will get discharged tomorrow. घरी सोडणे means to leave for the home, to get discharged. So she will get discharged tomorrow. Wow. Very happy to hear that. Thank you, that old lady said. Nurse asked, are you her sister? No, I am Nirmala herself from 302. Nobody was telling me exactly. Third sangena. Third means clearly, exactly. So nobody was telling me clearly. That's why I thought, let me inquire myself. एक दादी ने हॉस्पिटल में फ़ोन किया और कहा, मुझे रूम नंबर 302 में जो निर्मला हैं उनकी तबीयत कैसी है, क्या मैं ये जान सकूंगी? थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ी चिंता लग रही है उनके बारे में, इसलिए मैंने
फ़ोन किया। 2 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, ऐसा कहते ऑपरेटर ने तीसरे मंजिल के नर्स से उनका फ़ोन जोड़ दिया। नर्स ने कहा, अब ठीक है, वे बीपी नॉर्मल है, सब टेस्ट भी नॉर्मल्स है। डॉक्टर कह रहे हैं कल घर भेजेंगे उन्हें। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर, धन्यवाद, दादी ने कहा। नर्स ने पूछा, आप उनकी बहन बोल रही हैं क्या? नहीं, मैं खुद निर्मला बोल रही हूँ, 302 में से। मुझे कोई भी सच सच नहीं बता रहा था या अच्छे से नहीं बता रहा था, इसलिए सोचा मैं खुद ही इंक्वायरी करती हूँ। So those were the jokes today. I hope you like the jokes and found it useful as a Marathi reading and listening practice. If you go to my Marathi channel Learn Marathi with Kaushik Lele, you will find a playlist which has Marathi reading and listening practice. So I have uploaded so far many videos. So if you see here, it has more than 30 videos now. So please subscribe to the channel, go to this playlist and listen to all the videos uploaded so far. Do let me know your feedback. So your feedback is important for me so that I will know what all things you like, what different activities you will like to hear here, so that which will help you in Marathi learning. So आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आपके जो भी दोस्त हो जिन्हें मराठी या गुजराती सीखना है, उन्हें मेरे वेबसाइट के बारे में ज़रूर बताना और इस यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताना। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।